Viewers, President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi today led the 76th Constitution Day celebrations from the historic Central Hall of the old Parliament building. The event focused on the theme Hamara Samvidhan, Hamara Swabhiman. Prime Minister Narendra Modi wrote a special letter to citizens highlighting the significance of Samvidhan in guiding the nation's progress. He also urged citizens to remember their duties, saying that national duties must come first and people's actions must strengthen the Samvidhan. The Prime Minister noted that the Constitution is now fully in force in Jammu and Kashmir, calling November 26th a day of immense pride for the entire country. However, the political debate around Samvidhan Divas has intensified, with Congress leader emphasizing the need to safeguard the Constitution. Rahul Gandhi stressed that protecting the Samvidhan is a responsibility for all citizens. Let me take you through the exact statement of Rahul Gandhi. And this is what he said. The Constitution is the voice of every citizen. We will not allow any attack on Constitution. It is my duty to protect the Constitution, Rahul Gandhi said as the leader of opposition in the Lok Sabha. He also said he will stand against any attack on Samvidhan. Other opposition leaders are also targeting the government over what they describe as threats to the Constitution. For example, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, who expressed concern that country's democratic principles and secular values are under strain. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin joined the chorus, asserting that attempts to undermine Constitution must be resisted. Congress leaders also raised alarm, saying Samvidhan is being eroded and highlighted continuous challenge to its authority. Listen in. न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है, पर आज ये पहचान खतरे में है। आज विडंबना ये है कि जो लोग कभी संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानते थे, सत्ता में आने के बाद मजबूरी और राजनीतिक आवश्यकता के कारण उसी संविधान को अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, संविधान के अंदर जो दी हुई आम आदमी के लिए जो सोच रखी गई थी, जिसको आज प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि मेरे जैसा व्यक्ति 24 साल तक सरकार का मुखिया रहा, ये संविधान की उपलब्धि है। तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस संविधान को तहस नहस करने का काम ना करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ दे कि कोई दूसरा आदमी भी आपकी तरह जमीन से उठ करे, जो आप बोल रहे हो, जमीन से उठ करके मुखिया के पद तक पहुंच सके। जो संविधान के अंदर दी हुई ताकतें हैं, जो संविधान के अंदर दिए हुए अधिकार हैं, उन अधिकारों पर लगातार कुठाराघात नहीं है क्या? क्या वह कानून संविधान के दिए हुए हमारे अधिकारों के ऊपर कुठाराघात नहीं हुआ? इसी तरह से आप टुकड़ों के अंदर हमला करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप पूर्ण रूप से सत्ता में आते तो बदल देते। भारतीय जनता पार्टी का संविधान से कोई लेना देना नहीं है, लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब वो अपने फेयरवेल पार्टी में अपने आखिरी संबोधन में इस बात को बोलते हैं कि उनके ऐतिहासिक फैसलों में बुलडोजर पे दिया गया फैसला, रिजर्वेशन पे दिया गया फैसला ऐतिहासिक है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात को कहते हैं कि कानून देश में मौजूद है, उसके बावजूद कानून का पालन नहीं हो रहा था। And viewers, the Bharatiya Janata Party has hit back at the opposition, claiming that the Congress party, particularly the Gandhi family, bears greater responsibility for undermining the Constitution. BJP pointed to the emergency period as an example, saying it reflected a serious assault on democratic principles. Listen in. With what face and with what confidence Congress is talking about Constitution? The biggest murderers of the Constitution is the Congress party and the first family of the Congress, Gandhi family. Who was the one who imposed emergency? Who was the one who defeated Ambedkarji twice? Who was the one who goes against Ambedkarji's views and says Muslim reservation should be there? Who is the one when 370 was removed and first time Constitution was implemented in Jammu Kashmir, Adhikar of Vanchit Samaj was given to them in terms of Arakshan, reservation? Who was the one who opposed the removal of Article 370? Who was the one who boycotted Samvidhanic programs just recently, the oath of the CJI or the oath of the Vice President or the Independence Day and Republic Day programs?